dear students, my name is Kinjal Patel and today we are going to look about the unit class 9 English medium, the sound of music. This is unit number 1 and this unit contains two parts. Number 1, the part number 1 is known as Evelyn Jeleni's character or the achievements what she has achieved in her life. Though she was deaf, though there was lots of adversities in her life, she achieved the biggest, right? In this chapter, this is what the last part of it that we are going to look. After this chapter, part 1, we are going to look about part 2 of the unit 1. That is, or that will be Ustad Bismillah Khan Sahnai, right? It is one of also the musical unit that we are going to look afterwards this. Let's talk about Evelyn Jeleni. Up to now in this unit, we have seen that Evelyn Jeleni was a kind of girl. She was a deaf, but her deafness was a gradual, right? At the age of 11 or at the age of 14, gradually her mother recognized that she had a problem. She had a problem in her ear. She could not hear properly. And the confirmation was one day she was in the orchestra. She was to play a kind of musical instrument. Though the instructor called her name twice, she stood still. She had not started playing that musical instrument. At that time, her mother first came to know that she had a problem in hearing. Now, my dear friend, she went to certain places for the checkup and gradually they came to know that due to the nerve problem she has to lose her power of hearing. Later on, there are also some indications. There were also some indications were given, such as the school friend and the school mistress called her parents for her decaying the result. This is one of the incident. You can conclude or you can take that her deafness is getting growing more and more. She was performing very badly at the education, where every teacher was ignoring her, that yes, you are not allowed to do something, you do not have power, you cannot hear, you are handicapped, so you will not do anything else. But my dear student, one thing that you have to remember, that if you have a firm determination to do the work which you just desire, no one can stop you. कोई आपको नहीं रोक सकता है. Let's take an example of Mary Kom. Right? She has nothing. She has nothing to even a box. She hasn't a kind of boxing gloves. But she did well. Today, her biopic was there. Right? Yes, dear. Think one of a kind of more character. I remember that Arunima Sinha, a kind of character. When she was traveling in a train, some thugs tried to snatch her gold chain. She opposed them and she had a fight with them. But due to certain reason, one of them gave her a frenzy kick and she was literally thrown out of the train. The train which was coming from the other side just choked her leg.
chopped her leg, and afterwards that she became a mountaineer. Can you imagine, with an artificial leg? So my dear student, one thing you have to remember always in your mind, that if one thing if you are get lesser or you get a failure, that doesn't mean that you are failing in your life, right? You always should try to work something different, and day will come that people will notice your success. You even don't need to notice your success. In the same procession, let's talk about further in the unit. She can feel the resonance following into her. Here, my dear student, the word resonance means a kind of feeling, a vibration following into her body. She started feeling certain vibrations in your body. That various vibration can be felt in her various kinds of parts of body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her barefoot and up her leg. Why she was just, कभी भी वो कंसर्न में जाती थी ना, she was used to removed her shoes because she can feel that vibration very easily, and it led to pass through the legs. Her bare feet up and her leg. Not surprisingly, it is not surprisingly, Evelyn delights her audience. She always, whenever people just go there to listen her, she always give them a free flight of joy, right? That is called delight. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year award. After achieving this, after doing so many concerns, after facing so many adversities in her life, one day she was called at Philharmonic Society, which is one of the most important award for the musician. Says master percussionist who trained her, वो master percussionist James Blake, her back something extraordinary. People who has nothing to show something to the world, and certainly they enhance their skill and they try to convince and to control the audience. That is known as extraordinary thing. What we hear, she feels. The percussionist of the troupe used to say, percussionist of the troupe मतलब यहाँ पे जो वो एक यंत्र होता है, एक साधन होता है म्यूजिक का, वो जो बजाने वाला होता है उसको यहाँ पे उसका अपर हैंड होता है, उसको मास्टर बोलते हैं. तो वो उसको इस तरह से बैकअप करता है, उसको बिल्डअप देता है. क्या बिल्डअप देता है कि यार जो चीज हम सुनते हैं वो महसूस करती है, हम सुनने के बाद भी उतना नहीं उसको रिस्पॉन्ड कर पाते जितना वो फील करने के बाद करती है. That is why she expresses music so beautifully, or maybe this is the reason that she can express the music in such a way that it looks a beauty out of the world. Evelyn confesses that she is something of a workaholic, a word which shows to work hard to achieve something or to be mastered something. कुछ चीजों के अंदर अगर आपको बहुत मास्टरी चाहिए, if you want to succeed in that work, you need to work for it. आपको वो काम करना पड़ेगा. सोचते सोचते आप वो काम नहीं कर सकते हो. मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूं जिसमें पढ़ाई होगी, ये होगा, वो होगा. ये सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट तब तक काम नहीं आती जब तक आप अपने अंदर से, अगर कोई आपको बोले कि बेटा खड़े हो, चलो आपका 8 बजे का टाइम हो गया, पढ़ो, तो आप नहीं कर सकते हो. अगर आप खुद से वो करना शुरू कर दो
तब जाके शायद वहां पे आपको कुछ सक्सेस मिल जाए। I have just got to work often harder and classical musician, but the rewards are enormous. As a classical musician, she had to work hard, and whatever she does in a form of work, practice, I should say, she was rewarded well for that. But obviously, my dear student, if you read properly, if you just practice of certain questions and units, right, you do the exercise properly and regularly, obviously your marks will be higher up. That will be the effect. तो अच्छा काम करोगे, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा. Apart from the regular consult, she also gives free consult in prisons and hospitals. ना इतना सब कुछ पा लेने के बाद whenever she does concerts, प्रोग्राम जो अपना कर रही है, वो रेगुलर कंसर्ट के साथ साथ कभी कभी वो फ्री कंसर्ट यानी म्यूजिकल थिंग्स लोगों के लिए कर देती है, जिसमें जब कोई प्रिजन में होता है, जिसको हम बोलते हैं जेल वगैरह, राइट, लॉकअप वगैरह के अंदर जो होते हैं, उनके लिए भी ये कुछ अच्छे प्रोग्राम करने के लिए जाती है, ताकि they can turn that she can turn the heart of that people who become a criminal, right? हॉस्पिटल्स के अंदर भी वो फ्री म्यूजिकल इवेंट्स करती है. She also gives priority to the classes for the young musician, जो कि नए नए अभी म्यूजिशियन बनने वाले हैं या उसकी ट्रेनिंग ले रहे, उनके लिए भी वो अपना मूल्यवान समय बिताती है, निकालती है, ताकि वो लोग भी उससे बढ़िया कुछ कर दिखाए. Richland of the Beethoven Fund from the Deaf Children says she is assigning inspiration for the deaf children. एक बंदा जो है जो फंड रिलीज करता है ऐसे डेफ चिल्ड्रन के लिए, वो एवलिन के बारे में बोल रहा है कि यार वो तो अ काइंड ऑफ शाइनिंग इंस्पिरेशन, एक चमकीली बात है कि जो लोगों को इंस्पिरेशन प्रेरणा देती है, राइट. They see that there is nowhere that they can not go. Apart from this, Evelyn Jelinek has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn ने उसकी उम्र के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन उतनी ही उम्र में, उससे दुगनी उम्र में जितना अचीव हो सकता है उतना उसने आधी उम्र में ही कर लिया है, because of her hard work and determination to the music. She has brought percussion to the front of the orchestra, a kind of instrument which was always been the behind side of the orchestra. She did perform in such a way that a musical instrument of percussion came forward from the rest of the musical instrument in the first row, and she demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, those who are not allowed to do something. They are just assuming that यार हमारे तो हाथ पाँव नहीं है, हम क्या करें, ये करें वो करें. लेकिन my dear student, this is not the age to become a road crew like this, right? You have to work. दुनिया में बहुत सारे पीपल हैं जिनके हाथ पाँव नहीं होते, फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव कर रखी है. इसका मतलब होता है कि आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कुछ काम करने के लिए, कुछ जगह पे पहुंचने के लिए. There should be aim to be reach over there. तभी आप कुछ कर पाओगे. People who look to her and say, लोग जो उनको देखते हैं और वो बोलते हैं, if she can do it, अगर वो कर सकती है, in spite of being deaf, I can, हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं. And not least, she has given enormous pleasure to millions.
एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्लेसर भी दिया है अपने म्यूजिक के जरिए। आई होप माय डियर स्टूडेंट दिस यूनिट यू हैव लर्न प्रॉपरली। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द हार्ड वर्क दैट आई हैव हाईलाइटेड इन द बोर्ड which you have to mention in your notebook. Thank you. Hello, good morning friends. Today we are going to look about class 9th English medium unit number 1, the sound of music. In that unit we have second part. The second part named as the Shehnai of Bismillah Khan. Shehnai of Bismillah Khan. Who was Bismillah Khan? Bismillah Khan was a famous musician of India, and he also well famous around the world as well. Now let's talk about what has mentioned in this unit. See, Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi. यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है dear student. When the story is of Emperor Aurangzeb के जो टाइम की है, तो यहाँ पे उसका नाम आना अनिवार्य है। एम्परर औरंगजेब ने क्या किया था, पुंगी करके एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, राइट, वो बजाना, जैसे आजकल फ्लूट आता है ना, वैसे पुंगी जैसा बड़ा सा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, तो उसको बजाने के लिए औरंगजेब ने मना कर दिया था। ही बैन्ड इट इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रील। क्यों बंद किया था? Why Emperor Aurangzeb has stopped to play the pungi in his royal court? Because the pungi's voice, or we can say noise, or we can say sound, वो श्रील मतलब बहुत कर्कश टीना था, जो हमारे ईयर को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देता था, वैसा एक अनप्लीजेंट सा साउंड था। That is why that emperor banned that pungi instrument to play in the royal court. Pungi become generic name of ready noise maker. एक ready noise maker होता है, जैसे आवाज करता है ना कंटिन्यूअसली, तीर की जैसे like that. तो ऐसे noise maker जो था हमारा, उसका एक जेनेरिक नेम दिया था, जिसको हम पुंगी बोलते हैं। Now if you had thoughts about it, few had thought that one day be revived. लोगों ने ऐसा सोचा था कि whatever the Aurangzeb or whatever we can say, what may be the reasons to stop that pungi to be played in the royal court, but the day will come that pungi, the instrument, will be revived or revised or reassembled in a new form and people will like it. तो यहाँ पे एक थॉट चल रही थी, a barber of a family of a professional musician. यहाँ पे एक बार्बर की फैमिली की बात की गई है, जो कि वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, जो सालों से, उनकी पीढ़ियों से भी कैन से, उनके फैमिली के अंदर म्यूजिक का बजाना, मतलब एक म्यूजिशियन आर्टिस्ट की तरह उनकी फैमिली बहुत प्रचलित थी। Who had access to the royal palace, और उनको रॉयल पैलेस के अंदर म्यूजिक बजाने के लिए एक्सेस दिया गया था। They were too much professional and they are having that much of power in playing that music, so they been accessed into the palace and decided to improve the tonal quality. tonal quality मतलब जो भी चीज अगर आवाज निकालती है तो उसकी आवाज कैसी होनी चाहिए, उसका जो टोन होता है वो कानों को अच्छा लगे वैसा होना चाहिए। ईयर शुड उसको एक्सेप्ट करना होना चाहिए, तो उसकी क्वालिटी को वो इम्प्रूव करते थे, थोड़ा सा इम्प्रूव करते थे, राइट। He chose a pipe. He chose a pipe with a natural hollow. Natural hollow state मतलब पहले से ही उसकी स्ट्रिंग जो होती है ना बीच में से खाली होती है, hollow,
राइट। जैसे हम स्ट्रॉ लेते हैं, स्ट्रॉ के का बाहर का जो लेयर होता है वो पैक होता है और अंदर से बिल्कुल वो कैसा होता है, होलो, खाली होता है, जिसमें से अगर हम हवा निकालें तो दूसरी ओर से बाहर निकल सकती है। That was longer and broader, जो कि वो पहले पुंगी जो उसकी बनावट थी उससे थोड़ी सी लंबी थी और ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब थोड़ी सी और चौड़ी भी थी देन द पुंगी, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी, और उसी की बॉडी पे वहां पे 7 होल्स किए गए थे। जैसे मान लोगे कि यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होल्स किए गए थे और यहां से बजाने के लिए जगह रख दी गई थी। दिस इज नोन एज रिवर्ड फॉर्म ऑफ पुंगी, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप व्हेन ही प्लेड। ही यहाँ पे कौन है? ही इज बिस्मिल्लाह खान, अबाउट whom we are talking in this unit. He played on it, वो उस पे बजाता था। Closing and opening some of these holes, ये होल में से कुछ बंद करने, कुछ खोलने, बंद करने, खोलने, ऐसे करके he started playing that pungi, right? Soft and melodious. ना उसकी जो अब आवाज निकली वो श्रील ना होके, अनप्लीजेंट ना होके, वो सॉफ्ट एंड मेलोडियस होने लगी, एंड द साउंड वर प्रोड्यूस्ड व्हिच वाज वेरी good and appropriate and pleasantly for the ears. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने यही इंस्ट्रूमेंट को फिर से कोर्ट के अंदर प्ले किया, रॉयल कोर्ट के अंदर, और लोगों ने उसको बहुत सराहा। मतलब अब वो एक्सेप्टेबल बन चुकी थी। This instrument was so different. ये इंस्ट्रूमेंट बाकी इंस्ट्रूमेंट से इतना अलग था पुंगी से, that it had to be given a new name. उसको एक नया नाम देने की जरूरत पड़ी। It was first played in the Sahas chamber. It was first played in the Sahas chamber. The first letter of this instrument given a name, that Shah. It was first played as Sahas chamber and was played by the Nai. Nai का मतलब होता है बार्बर। बार्बर इट इज एन इंग्लिश वर्ड एंड नाई इट इज हिंदी। तो वो शाह के रॉयल कोर्ट में बजाया गया था इन फ्रंट ऑफ शाह, और नाई ने बजाया था, मतलब बार्बर ने बजाया था, इसलिए उसका नाम नाई। मतलब दोनों को अगर मिला दे तो सह नाई, इस तरह से उसका एक नया नाम, पुंगी की जगह पे उसको एक नया नाम मिला, एंड दैट वाज नेम्ड शहनाई। दिस इज हाउ द पुंगी वाज गिवन अ नेम ऑफ शहनाई। The sound of the Sahnai began to consider as auspicious. Auspicious यानी मधुर, मीठा, पवित्र जिसको बोलते हैं, जो टेम्पल्स वगैरह जैसी जगहों पे, मस्क जैसी जगहों पे बजाई जाती हो, अच्छे जहां पे प्रसंग चल रहे हो, खुशी का माहौल हो, एट दैट टाइम ये पुंगी बजाई जाती थी। That is why it is known as auspicious. And for this reason, it is still played in the temples, and we can say it can be played in the wedding as well. It is indispensable component of any North Indian wedding. It is said that, sir, indispensable का मतलब होता है जिसको अगर ना होना तो शादी ही ना हो। इस तरह की ऐसी चीज, जरूरी, अनिवार्य जिसको बोलते हैं, एक ऐसी चीज बन गई थी। नॉर्थ इंडियन जितनी भी वेडिंग होती है उसके अंदर अगर आप ये शहनाई नहीं बजाते हो तो शादी शादी जैसी लगती नहीं है। एंड an assemble of 9 instruments found at a royal court. Later on it was been added as one of the instrument in a royal court. My dear student, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि पुंगी जो चीज है वो पहले खराब थी, लोग उसको पसंद नहीं करते थे और कोर्ट से उसको बाहर निकाला गया था। It was उस्ताद बिस्मिल्लाह खान who just reassemble it, remake it and work on it, and उसका जो साउंड जितना भी था उतना मधुर बना दिया, प्लीजेंटरी बना दिया कि रॉयल कोर्ट के अंदर उसको स्थान तो मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज नोन एज ऑस्पिशियस, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रसंगों के लिए भी यूज होता गया।
Till recently it was used only in the temples. आज तक वो temples और wedding के अंदर ही बजाया जाता था. The credit for the bringing this instrument onto the classical stage. अब classical stage के अंदर पहले नहीं बजाया जाता था, but it was Bismillah Khan, my dear student, who bring that instrument into the classical music instruments, right? जितने भी क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बजाए जाने वाले थे उसमें ये चीज का नाम नहीं था पहले, लेकिन बिस्मिल्लाह खान proved its ability and put that instrument into it. As a 5 years old, he played gilli danda near a pond in the ancient state of the Dumraon in Bihar. बिहार के एक इलाके के अंदर ये बिस्मिल्लाह खान पहले क्या करते थे, छोटे थे तब गिल्ली डंडा इस तरह का एक गेम है वो खेल रहे थे. He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल. वहां पे एक बिहारी जी का टेम्पल था, लॉर्ड कृष्णा को अलॉट किया गया हुआ है, तो यहाँ पे उनका एक टेम्पल था, वहां पे ये हर रोज जाया करता था टू सिंग द भोजपुरी चैता. वहां पे एक किस्म का सॉन्ग गाया जाता होगा जिसको हम चैता बोलते हैं, तो वो उसको गाने के लिए जाते थे. एट द एंड ऑफ विच he would earn a big laddu weighing of 1.25 kg. और वहां पे इतना बजाने के बाद उसको एक बड़ा सा प्रसाद के स्वरूप में एक लड्डू मिलता था जिससे वो बहुत खुश होता था. I hope my dear student it will help you in your reading and understanding the textbook of class 9. Thank you.